नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक पल्स इंडिया पर। और आज हम लेकर आए हैं कुछ ऐसा झटका जो आपको हिला के रख दे। आज है 24 जून 2025 और मार्केट ने फिर से एक ट्विस्ट दिखा दिया। क्या यह सिर्फ रिकवरी की शुरुआत है या एक और डंबल? अगर आप चाहते हैं कि आपके पोर्टफोलियो के बटन्स सेफ रहे तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए। पिछले सेशन यानी मंडे को मार्केट धक्के खा गया। सेंसेक्स नीचे गया 511 पॉइंट्स, वो भी एक ही दिन में, और निफ्टी गिर गया 140 पॉइंट के साथ 24,981.90 पर क्लोज हुआ। इस गिरावट के पीछे था ईरान इजराइल टेंशन, क्रूड ऑयल स्पाइक और मिडिल ईस्ट से सप्लाई डिसरप्शन की धमकी। लेकिन मार्केट ने अपने आप को संभाला। मिड स्मॉल कैप्स ऊपर रहे क्योंकि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने डिप खरीदा। अब सुबह गिफ्ट निफ्टी ने हमें एक चकमा दिया, रॉकेट रेडी। यह सिग्नल दिया +236 237 पॉइंट्स अप, क्योंकि ट्रंप ने अनाउंस किया इजराइल ईरान सीज फायर, जिससे क्रूड गिरा और ग्लोबल रिस्क सेंटिमेंट सुधरी। एशियन इंडेक्सेस रैली में निके, कॉस्पी 1 से 2% तक अप ऊपर चले गए। यही बात इंडियन मार्केट में भी इंपोर्ट होती नजर आ रही है। आज सेंसेक्स स्टार्ट हुआ 81,896.79 से, जिसमें निकला 511.8 का गैप। बट गिफ्ट क्यूज स्ट्रांग है और आज फिक्स्ड क्लोज पर थोड़ा रिकवरी हो सकता है। निफ्टी अभी 24,971.90 पर फ्रोजन है और बैंक निफ्टी 56,059.35 है। सबसे बड़ा गेनर ट्रेंड +3.77%, जिसने फैशन रिटेल में बाउंस दिखाया। बिगेस्ट लूजर इन्फोसिस -2.40। आईटी सेक्टर वीक था, मेटल सेक्टर शाइनिंग स्टार लगा। निफ्टी मेटल +0.66%। टेक सेक्टर में प्रेशर रहा, निफ्टी आईटी -1.48%। एफआईआईज ने आज 5,595 करोड़ का फ्रेश इनफ्लो किया, बट डीआईआईज ने प्रॉफिट बुक करते हुए 1,854 करोड़ निकाल दिया। ये वही ट्रेंड है, एफआईआईज सपोर्ट कर रहे हैं, डीआईआईज प्रॉफिट काट ले रहे हैं। जब एफआईआई बाइंग हो और डीआईआई सेलिंग, तब मार्केट रेंज बाउंड रह सकता है। निफ्टी अभी 24,971 के आसपास है। सपोर्ट जोन्स 24,900 टू 24,800। रेजिस्टेंस 25,000 के ऊपर ब्रेकआउट पॉसिबल है तो बुल्स रेडी है। बैंक निफ्टी का सपोर्ट 56,000, 55,500। रेजिस्टेंस 56,500 to 57,000. Welcome to MindTap Summary, your space for powerful ideas, book insights, and deep reflections that rewire your thinking and unlock your potential. Here, we don't just talk about success. We explore its roots, dive into its psychology, and bring you timeless lessons that can elevate your life one thought at a time. So, if you're ready to feed your mind with inspiration that leads to transformation, you're in the right place. Today's deep dive centers around a simple but profoundly transformative idea. Success starts in your mind. It's a phrase that looks simple on the surface, but holds mountains of meaning when we begin to unpack it. Think about this. Every great achievement, every empire, every invention, every journey began as a single thought. Not with resources, not with connections, not even with talent, but with a belief, a mindset, a spark within the mind that whispered, "What if this is possible?" Your mind is your first battlefield. Before you lift a finger, make a call, or write a plan, your thoughts are already shaping the outcome. That's why success doesn't start when you get the job, or the money, or the recognition. It starts when you begin thinking like someone who deserves all those things. It starts the moment you begin to train your thoughts to see beyond your current limitations. There's something remarkable about the human brain. It believes what you tell it, especially when you repeat it. If you constantly tell yourself you're not capable, your brain begins to operate in a way that confirms that belief. But the reverse is just as powerful. When you begin feeding your mind with empowering, growth-centered thoughts, you rewire your entire mental operating system. Most people think the mind is just where thoughts happen, but it's more than that.
The mind is an engine. It's the command center. Every decision you make, every reaction you have, every goal you chase, originates in your mental narrative. And the people who understand this, who take ownership of their internal dialogue, gain access to a level of success that feels almost unfair to those still waiting for motivation to strike. But here's the truth. Motivation doesn't come first. Mindset does. The belief must come before the result. Too often, we wait to believe until we have evidence, but that's not how winners think. Winners believe first. They trust the invisible process. They tell themselves the story of success long before it happens, and because they believe it so deeply, they show up differently. They act with confidence. They persist through setbacks. They don't need permission to pursue their vision. Now, ask yourself, what kind of story are you telling yourself? Are your thoughts helping you grow, or are they keeping you small? Are you feeding your mind ideas that challenge you to rise, or ones that justify why you're stuck? Because your life will rise to meet the quality of your thoughts. This is not just theory. This is reality, proven by every successful person who started with nothing but belief. Remember, your mind is programmable. Just like a computer, it runs on the code you install. Negative self-talk, fear, self-doubt, that's outdated software. It's time to uninstall those mental viruses and replace them with purpose, clarity, and intentionality. One powerful way to do this is by practicing mental discipline. That means being aware of what you allow into your mind, what you watch, what you read, who you listen to. It also means catching your thoughts in the moment. When you hear your inner voice say, "I can't," you replace it immediately with, "How can I?" That one shift can change the entire course of your decision-making. Let's be honest, this takes work. It's easy to let your thoughts run on autopilot, to be reactive instead of intentional. But success never grows in comfort zones. It grows in the space between effort and belief.